Hello friends, how are you? Have a nice day. Myself Prakash sir of a NEET Computer Tutorial Platform. Congratulate you to our YouTube channel. ମୁଁ ଆମର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଥିଲା ଦି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ୱାର୍କଫ୍ଲୋ and hospital by surgeons for delicate operations by manipulating devices through common computer is called। हॉस्पिटल मानकरे सर्जन माने जो ऑपरेशन करती डिलिकेट ऑपरेशन करती से माने किसी इंपोर्टेंट डिवाइस यूज करी कंप्यूटर ऑपरेट करी थांती आ से जो टेक्नोलॉजी से माने व्यवहार करती ताको हमें कौन कहते एमसीयू रो ए क्वेश्चन आंसर मु निश्चित ए वीडियो रे प्रथम क्वेश्चन रे प्रेजेंटेशन करी एमसीक्यू रो प्रत्येक क्वेश्चन आपण मूलर शेष पर्यंत देखंतु आ निश्चित भाव प्रत्येक क्वेश्चन आपन को संपूर्ण भाव सहाय्य करिवो विभिन्न इंटरव्यू रे परीक्षा रे आपन को निश्चित सपोर्ट करिवो। लेट अस कम टू दी वीडियो क्वेश्चन नंबर 66। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन क्लिनिकल वर्कफ्लो एंड हॉस्पिटल बाय सर्जन्स फॉर डिलिकेट ऑपरेशंस बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइसेस थ्रू कंप्यूटर कॉल्ड। द अल्टरनेटिव आंसर्स आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर रोबोटिक्स, सिमुलेशन, computer forensic, MRI and none of the above। The correct answer is robotics because simulation कहले reproducing clinical situations using interactive video। MRI कहले magnetic resonance imaging, it generate radio waves by computer to detect the properties of a living tissue। मनुष्यर जो टिश्यू को परीक्षा करिया पाई पोजीशन को चेक करिया पाई साधारणतः में MRI व्यवहार करथांती मेडिकल साइंस रे MRI व्यवहार करा जाय। सो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन the correct answer is point number A, robotics। Then question number 67। Which of the following buttons or connectors are placed on the rear panel of a PC? Rear panel कहले पर्सनल कंप्यूटर रो पछपट बैक साइड को बुझाए सेठी केउ कोन बटन सब कनेक्शन करा जाय थाए कनेक्टर सब यूज करा जाय थाए। The alternative options are power in socket, PS2 port socket, USB port socket, DVI port socket and all of the above। So the correct answer is all of the above। Now let us check the example here। I have mentioned here one diagram, the backside of the CPU। So DVI means digital visual interface। So the correct answer is power socket also available, PS2 port also available, USB port also available, DVI port is also available। So that is why the correct answer is all of the above। Point E is the correct answer। Then next question, battery used in CPU called as CMOS stands for। सीपीयू भितर गोटे बैटेरी आम व्यवहार करें सीमस बैटेरी बोली कही से सीमस बैटेरी फुल फॉर्म कौन? कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सिस्टम, कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉमन मशीन ऑफ सर्वे, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर बी, कॉम्प्लीमेंटरी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 69। एनी सेट ऑफ डिजिट्स और अल्फाबेट्स आर जनरली रेफर्ड एज। The alternatives are characters, symbols, bits, bytes and all of the above। The correct answer is characters because character is generally a unit of information in computer application। So that is why set of digits or alphabets that we call as a character of the computer। Then question number 70। What is the binary code for the letter B? Capital B पाई आमे यदि binary code बाहर करबा ताले केते हबो? The options are 010001, 01 चार्टा 410 and 01100010 and 01011010 or none of the above। The correct answer is 010010 because how can we confirm this question answer? The ASCII code of a B is equal to 66। Capital A ASCII code is 65, capital B ASCII code is 66। Then if we convert 66 into binary code, then let us check this diagram। So 64 and 64 and 2, 64 and 2, both combination of these two numbers, addition of these two numbers becomes 66। So according to this arithmetic, 64 and 2 becomes 1 and 1 and others are 0। So that is why 100010 by point number B is the correct answer। Then question number 71 is the performance period to locate a file of a hard drive or other storage device is called। Latency time, response time, access time, seek time, all of the above। The correct answer is access time because latency time means time required by the head of a disk to rotate to the requested sector from the current position, that is called as latency time।
Seek time means time required by the head of a disk for information to be on a disk by disk drive, that is called seek time. So that is why access time is the correct answer, because access time is equal to latency time plus seek time is called as access time. So that is why point number C is the correct answer for this question. Then question number 72, which was the world's first electronic digital programmable computer developed in Britain? Britain में डेवलप होता प्रथम डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर किए? The alternatives are Colossus, Enigma, Z3, Z2 and none of the above. So the correct answer is Colossus, because Enigma was a device used by Germany's military command to encode strategic messages during war. And Z3, this is the German electromechanical computer implemented in the year of 1941. And Z2, this is the previous model of a Z3 built in 1940. So that is why the correct answer is point number A, that is Colossus. Then question number 73, the data storage device used to store very high resolution video format is? अधिक हाई रिजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट रे स्टोर करूथबा डाटा स्टोरेज डिवाइस हमें काहा को व्यवहार करते? डीवीडी, सीडी रोम, एसएसडी, ब्लू रे, ऑल ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ब्लू रे, because a Blu-ray disc, this is a new optical disc format that offers more than 5 times the storage capacity of a traditional DVD. तेणु पूर्व डीवीडी अपेक्षा ये हमको कौन करे 5 टाइम्स अधिक फास्ट ऑपरेशन देता है. तेणु से ब्लू रे इज द डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज्ड टू स्टोर वेरी हाई रिजोल्यूशन वीडियो फॉर्मेट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज यूज्ड बाय द ब्लू रे डिस्क टू स्टोर डाटा? ब्लू रे डिस्क रे डाटा स्टोर करिया पई आमे की फेनोमेना यूज करंती? मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, लेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक and none of the above. The correct answer is laser system. Laser system is used in a Blu-ray disc to store data. The next question is, what is the alternate name of the hard disk drive? Hard disk drive जो थे हमें डाटा परमानेंटली स्टोर करूचंती तार अल्टरनेट नेम कौन? तार अल्टरनेट नेम हमें कौन कहते? Solid state drive, thin film drive, Winchester drive, magnetic tape, none of the above. So the correct answer is Winchester drive, because Winchester drive, it has developed by IBM that had 30 MB of fixed storage and 30 MB of removable storage. So that is why for this question Winchester drive is the correct answer for this question. Then question number 76, which of the following is used in an optical mouse? Optical mouse रे एमान भितर कोटा व्यवहार होता है? Sensor, infrared light emitting diode, microwave, both B and C. The correct answer is LED, light emitting diode. The next question is 77, which signal is used with wireless mouse communication system? आमे साधारणतः wireless mouse यूज करथांती. ए wireless mouse रे आमे क्यों सिग्नल व्यवहार करथि? The alternatives are radio waves, infrared waves, electromagnetic signals and microwaves and B and C. So that is why the correct answer is radio waves. Radio waves, that is the electromagnetic radiation with the longest wavelength. And infrared जोटा हमें कहउचंती, infrared use light to carry signals from the remote to the device it controls, just like the use of a television set in our homes. Microwave कहले that is the high frequency radio signal transmitted in a straight line through the air. So that is why the correct answer is radio wave, which is used with a wireless mouse. So then next question is, the number of pixels visible on the computer screen is called dash. कंप्यूटर जो नंबर ऑफ पिक्सल विजिबल हुए ताको हमें कौन कहते हैं? डॉट पिक्सेल्स, कलर डेप्थ, स्क्रीन रिजोल्यूशन, स्क्रीन प्रॉपर्टी, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज स्क्रीन रिजोल्यूशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस? या भितर काहा को हमें कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बोली कहबा? कीबोर्ड, वेब कैमेरा, लाइट पेन, VDI, नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज VDI, virtual desktop infrastructure. It is a technology that refers to the use of a virtual machine to provide and manage virtual desktop. So that is why point D is the correct answer, that is called as a VDI. Then question number 8 is, which of the following is the fastest port data transfer? जिते पोर्ट आम यूज करछंती ता भितर को पोर्ट रे अधिक स्पीड डाटा ट्रांसफर हेता है? सीरियल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, फायरवेयर पोर्ट एंड नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज पॉइंट नंबर D, that is फायरवेयर पोर्ट. This is the high speed standardized connection port for external hard drives and HD video camera. So that is why point number D is the correct answer. Question number 81 is, the basic laser printer prints number of pages per minute. साधारणतः लेजर प्रिंटर गोटे मिनिट रे केते पेज प्रिंट आउट हमको देता है? 4 to 8 pages, 10 to 20 pages, 20 to 30 pages and 30 to 40 pages and none of the above. The correct answer is 30 to 40 pages per minute.
सो ए टोनर कार्ट्रिज ये जो लेजर प्रिंटर है हमें साधारणतः कौन यूज करते हैं टोनर कार्ट्रिज यूज करते हैं ए टोनर कार्ट्रिज इन लेजर प्रिंटर कैन प्रिंट अप्रोक्सीमेटली 2500 पेजेस टू 10,000 पेजेस डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट cartridge quality. So if we use better quality cartridge, then we can also print out more pages of a document. Then question number 82 is printer in which printing head and paper is forced together to form the letter is called. Printing head सहित पेपर मिसिक फोर्स हुए से प्रिंटर को आम कौन कहते? Impact printer, laser printer, inkjet printer, thermal printer, and none of the above. The correct answer is impact printer. Because laser printer uses a non-impact photocopier technology where there are no keys striking on paper. So that is why this is not the correct answer for this question. Thermal printer heat pins and form characters and heat sensitive paper. So that is why this is not the correct answer. Inkjet printer prints by spraying droplets of ink onto the paper. So that is why this is not the correct answer. So that is why according to this question, point number A, that is impact printer is the correct answer. Then question number 83 is the word bandwidth in computer network is referred as. Computer network रे bandwidth कहले आमे कोन बुझंती? Data cable length, data transfer amount, data transfer speed, time of data transfer, and none of the above. So the correct answer is point number B, that is data transfer amount. केबल माध्यम रे इंटरनेट माध्यम रे बा नेटवर्क माध्यम रे गोटे मिनिट रे बा गोटे सेकेंड रे केते अमाउंट डाटा ट्रांसफर हुए ताको हमें बैंडविड्थ बोली कहिथांते. सो दैट इज व्हाई पॉइंट नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Then question number 84 is what is autoresponder used on mail server that automatically replies to the email? ईमेल रे ऑटोमेटिकली से रिप्लाई करिवो सेही ऑटो रेस्पोंडर एक्चुअली तक हमें कोन कहते? ऑटो रेस्पोंडर को हमें कोन कहते? इट मे बी द सॉफ्टवेयर, इट मे बी द प्रोग्राम, इट मे बी द हार्डवेयर, इट मे बी द कमांड, नन ऑफ द above. So that is why the correct answer is program. So this is a program. Auto responder is a program that is a sequence of operations allow automatic execution that is used in internet. But software is a set of a computer program used for different applications. So that is why point B is the correct answer. Then question number 85 is any unknown person or firm sends you mail in a lucrative way asking for sensitive banks and online payment information is called. देखो ये क्वेश्चन टा गोटे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आम पाई जे कोनसी अननोन पर्सन हमको फोन करबा किंबा कोनसी प्रकार मेल करबा कि जे बैंक रो इन्फॉर्मेशन मागंती कोनसी बैंक रो इन्फॉर्मेशन मागंती कोनसी पर्टिकुलर डाटा इन्फॉर्मेशन से माने चाहती तो सेही टाइप रो अननोन पर्सन जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन मागंती ताको हमें कोन कहबा? दैट इज कॉल्ड एज दैट इज अल्टरनेटिव ऑप्शंस आर हैकिंग, स्पैम, पब्लिशिंग, थेफ्ट, नन ऑफ द अबव. भाबुथिबे एथरो निश्चित गोटे हेइथिबो किंतु एक्चुअली नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर बिकॉज़ हैकिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर. स्पैम, पब्लिशिंग and theft, this is not the correct answer. So that is why none of the above is the correct answer. The correct answer is phishing because phishing is a cyber crime. phishing को cyber crime बोली कहा जाए. How hacking कहले unauthorized access of data in a system of a computer that is called as hacking. So that is why phishing is the correct answer. So this answer is not in my option. So that is why point number E is the correct answer. Then the DON, dynamic ad hoc wireless network, usually comes under which generation of a network? Dynamic ad hoc wireless network एटा नेटवर्क रो को जनरेशन ने जाउची? 2G, second generation, third generation, fourth generation, fifth generation, and all of the above. The correct answer is fifth generation. Because dynamic ad hoc wireless network, this is a project is a developing theory comes under 5G network. ये जो developing project है, ये जो theory टा 5G network रे actually launch करिछि. आउ आमे देखिबा साधारणतः डाटा ट्रांसफर रेट जदी हुए फर्स्ट जनरेशन ने 2.4 kbps kilobits per second, second generation is 64 kbps, third generation is 144 kbps to 2 mbps megabits per second, fourth generation रहला 100 mbps to 1 gbps, and fifth generation speed होची excess of 1 gbps. So that is why this concept is applied in fifth generation. Then question number 87 is what is the full form of a worm that is a data storage technology preventing the drive from erasing the data? वार्म रो फुल फॉर्म कोन जोटा के डाटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी रे व्यवहार करा जाए डाटा को इरेज होतबारु रक्षा करे प्रिवेंशन दे. द ऑप्शंस आर राइट वंस रीड मोर, राइट वंस रीड मेनी, राइट वंस रीड मोर मेनी, एंड राइट आउट रीड मोर, एंड नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज राइट वंस एंड रीड मेनी. दैट पॉइंट नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 88 इज which of the following software application is appropriate for performing numerical, statistical, trigonometric calculations? को सॉफ्टवेयर रे आमे न्यूमेरिकल, स्टैटिस्टिकल, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड साइंटिफिकल कैलकुलेशन आमे करि थाउ? वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट, एंड नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज स्प्रेडशीट
because generally आम यूज करती what we use Microsoft Excel software use Microsoft Excel software is a spreadsheet application software. It is giving us three important facilities just like what we can say accounting application, database application and graphical interpretation. So that is why Microsoft Excel is a spreadsheet application software that is giving us a numerical, statistical, trigonometric and scientific calculation systems. Then question number 89 is which computer of the following is known as number cruncher? ये जो कंप्यूटर मान भितर कौगुड़ी को आम नंबर क्रंचर क्या आम नंबर क्रंचर बोली कहला लैपटॉप कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड नॉन ऑफ द अबव. The correct answer is super computer. Point number C is the correct answer because super computer is adequate to solve immense numerical calculations, scientific problems, etc. So that is a super computer is called as the cruncher computer. Then the last question is what is the extension name of MS DOS command? Microsoft DOS command, Microsoft disk operating command जो हम यूज करछंती तार एक्सटेंशन नेम कोन .dos .exe .bak .doc none of the above. So the correct answer is none of the above because the correct answer is .com. .com is not available in my option, so that is why E is the correct answer, none of the above. .exe it stands for executable file. .bak it stands for backup file. .doc it stands for document file. So that is why .com it stands for the DOS command file. At the end of this video, there is a question for you. Comment me the real answer. The question is, we store data into the hard disk drive, solid state drive, pen drive. Sometimes we write data into the CD drive by using the process called. आम साधारणतः हार्ड डिस्क ड्राइव रे, सॉलिड स्टेट ड्राइव रे, पेन ड्राइव रे डाटा स्टोर करता किंतु आमको समय बेले बेले आमको सीडी कि डीवीडी रे डाटा मध्य स्टोर करने को पड़ता है. जो प्रोसेस व्यवहार करी आम सीडी कि डीवीडी रे डाटा स्टोर करती से प्रोसेस को कौन कह जाए. होप दिस वीडियो विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट. आपण आम वीडियो को देखुचंती सेथिपई आम तरफ आपण मानकु धन्यवाद. वीडियो आपण को केमती लागिला, आपण प्रत्येक क्वेश्चन पर कौन कौन ऑब्जर्व कले ताहा हमको कमेंट माध्यम रेकमेंड करंतु. मु एक क्वेश्चन जो प्रश्न देइची से क्वेश्चन निश्चित आसंता वीडियो रे पर वीडियो रे प्रथम क्वेश्चन मु तो प्रेजेंटेशन करिवि. तथापि तार क्वेश्चन आपण जदि जानि चंती ताले कमेंट बॉक्स रे जणांतु. आ जदि आम चैनल को आपण प्रथम करी आछंती ताले आम चैनल को शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन को क्लिक करंतु. आउ कमेंट माध्यम रे आपणकर मतामत मते निश्चित जणाइबे.